Are we live? Yes. Hey all, namaskar, sat sri akal, salam alaikum. I hope you're all well, fine, healthy, safe. Good to have you guys and I welcome you all to this session जहाँ पर बहुत सारे बच्चे एक्चुअली डिमांड कर रहे थे बिकॉज बहुत सारे बच्चों का एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि सर ज्योमेट्री नहीं आती, ज्योमेट्री स्टार्ट करने में प्रॉब्लम आती है एंड ज्योमेट्री को किस तरीके से स्टार्ट करें. ज्योमेट्री के सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं, मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते. तो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन विच आई गेट ओवर Telegram, over YouTube. So I thought, why not address it with some experts, I would say. ठीक है, बिकॉज जो लोग शेरिगन कॉरेस्पॉन्डेंस राउंड क्लियर करते हैं वो एक तरह से मतलब इंडिया के बेस्ट ज्योमेट्री क्या कहते हैं सॉल्वर्स बन जाते हैं. सो अगेन गाइज, आउट ऑफ द 7 स्टूडेंट्स आउट ऑफ इंडिया जिन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस राउंड क्लियर किया और राउंड 2 के अंदर जिसको इनविटेशन मिला, 2 ऑफ यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. तो पहले तो सब लोग तालियां मार दो इन दोनों बच्चों के लिए जिन्होंने देश का नाम एक तरह से बहुत अच्छी तरह रोशन किया. बिकॉज इस बार इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्रणव एंड अर्नब, कट ऑफ काफी ज्यादा ऊपर गया एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स. तो कट ऑफ काफी ऊपर गया है एंड तो 7 लोगों को बेसिकली कॉल आया है सेकेंड राउंड के लिए, जो कि रशिया में होता है. फॉर सम रीजन इस बार, फॉर नॉट सम रीजन बट ऑब्वियस रीजन, रशिया में नहीं हो सकता. सो अगेन सेकेंड राउंड कैसे होगा तो उसका अभी चिंतन चल रहा है. बट these 7 students have been invited and out of them 2 of you, Arnav and Pranav, have cleared correspondence round. तो फटाफट से पहले तालियां मार दो यार सबके लिए, बिकॉज ये लोग अपना टाइम तुम्हारे लिए यहाँ पर आए हैं, तुम्हारे लिए यहाँ पर आए हैं एंड टाइम निकाल कर तुम्हारे लिए आए हैं. सो अगेन इट मेक्स ऑल दी मोर सेंस दैट हम लोग इन दोनों का वेलकम करें अच्छी तरीके से. एंड जो भी आज बातें करने वाले हैं, सो आज हम बातें करने वाले, डिस्कस करने वाले ज्योमेट्री के ऊपर काफी ज्यादा, कि एक तो शरीगन होता क्या, कैसे रजिस्टर करना होता है, कैसे पार्टिसिपेट करना होता है, और इन दोनों की जर्नी कैसे रही. एंड ऑल्सो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन भी एड्रेस करने वाले हैं, पर्टिकुलरली उन बच्चों के लिए जिनको ज्योमेट्री से बहुत डर लगता है. ज्योमेट्री इज वन पार्ट जो कि जेई के अंदर नहीं आता, बट अगेन बाकी और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे कि जेई हो गया, सॉरी केवीपी हो गया, मैथ्स ओलंपियाड हो गया, इसके अंदर ज्योमेट्री आईएसआई हो गया, इसके अंदर काफी आता है एंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है ज्योमेट्री की एज फार एज इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंसर्न. सो लास्ट में हम वो क्वेश्चन भी एड्रेस करेंगे कि इन्होंने स्टार्टिंग कैसे किया ज्योमेट्री का, व्हाट डिड दे स्टार्ट फ्रॉम एंड किस तरीके से अपनी जर्नी ऐसी बनाई सो दैट आज इस लेवल पे, आज इस मुकाम पे खड़े हैं कि 7 में से 2 बच्चे यहाँ पर हैं. ऑलराइट, सो लेट अस गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं. सो पहले लेट अस एड्रेस द सिंपल क्वेश्चन. पहले पहले तो अर्नव एंड प्रणव, मैं एक हल्का सा बाइट लेना चाहूंगा तुम दोनों का कि पहले तो फील कैसे हो रहा है, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ, बिकॉज आई थिंक तेरा प्रणव तुम्हारा भी एंड अर्नव तुम्हारा भी, दिस इज योर फर्स्ट टाइम सिलेक्शन इन शेरिगन. एंड कितना अटेम्प्ट दिया था प्रणव तुमने भी एंड अर्नव भी. सो लेट अस स्टार्ट विद प्रणव. So I attempted 14. So I attempted 14 questions. No. I'm asking ki, was this your first attempt in Sherigan? Yeah, this was my first. Okay, this was your first. Okay. Yeah. So this time, like, I did 14 questions. Each question is 7 marks, and I got 97 marks. Amazing. Like, I got 1 mark got deducted for missing some trivial case, I think. Okay. So yeah, great. I expected the cutoff to be like 70, 80 is range. So I thought like I'll do 10 more to be on the safe side, and luckily that helped. Great. Amazing. तो बाय द वे गाइस, दोज आर वंडरिंग व्हाट इज शेरिगन, तो अर्नब थोड़ा सा इनको शेरिगन के बारे में बता देते हैं. सो शेरिगन का फर्स्ट राउंड जो होता है बेसिकली इंडिया में 9th से लेके 12th तक के बच्चे, 9th से 11th बेसिकली, 12th वाले बच्चे अगर देते भी हैं तो आई थिंक सेकेंड राउंड तक पहुंच नहीं पाएंगे बिकॉज तब तक वो स्कूल से पास आउट हो जाते हैं. तो 9th से 11th तक के बच्चे को देना चाहिए. एंड एक तरह से ये अपने घर में बैठे बैठे तुम दे सकते हो एग्जाम एंड तुम अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चंस. यू हैव ऑल दी प्रिविलेज टू यूज ऑल दी काइंड ऑफ मटेरियल दैट यू हैव. एंड फिर भी बहुत कम बच्चे सेकेंड राउंड तक पहुंच पाते हैं. तो अर्नब, कैसा रहा तुम्हारा जर्नी ओवरऑल शेरिगन को लेकर? वाज दिस योर फर्स्ट अटेम्प्ट? Yes, this was my first attempt, and it was quite hard for me. Like I started my geometry. I started doing geometry from like 1 year ago.
like geometry was not my strong point, but yeah, 1 year was quite nice, Amazing, and I amazing. qualified. So like everyone is calling me for like congratulations and all. Amazing, great. So guys, देखो यही this is what I want to tell. So those of you who are feeling कि सर ज्योमेट्री नहीं आता, अर्नब की स्टोरी से समझो एंड सीखो दैट इसने बोला कि पहले ज्योमेट्री इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं था एंड ही स्टार्टेड पुटिंग इन एफर्ट्स फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर ओनली, और 1 साल एफर्ट्स पुट करके ऐसा ऊपर गया ग्राफ, ऐसा ऊपर गया कि शेरिगन क्लियर हो चुका। एंड शेरिगन बाय द वे इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ज्योमेट्री ओलंपियाड्स अक्रॉस द वर्ल्ड गाइस। पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ज्योमेट्री ओलंपियाड जो कि रशिया में होता है। तो फर्स्ट राउंड अपनी अपनी कंट्रीज में बच्चे देते हैं अगेन जनवरी से मार्च तक। सो अगेन लेट मी गो ओवर टू सम क्वेश्चंस गाइस, थोड़ा सा क्वेश्चंस से हम शुरू करते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन, सो व्हाट इज द शेरिगन ओलंपियाड? तो शेरिगन ओलंपियाड क्या है? तो कौन कौन इसका आंसर करेगा? प्रणव, तुमसे स्टार्ट करते हैं। तो एक बार अपने यूजर्स को बता देते हैं, दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो व्हाट शेरिगन इज एंड हाउ प्रेस्टिजियस दिस इज, हल्का सा आइडिया कि कैसे होता है। जनवरी से मार्च के बीच में ये एग्जाम फर्स्ट राउंड होता है, एंड कब सेकंड राउंड होता है, एंड कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, क्या फॉर्मेट होता है। तो फटाफट से इनको इनको हल्का सा आइडिया दे देते हैं। So Sharygin may like it's a Russian Olympiad and it's based fully on geometry. You get I think 3 months to solve the questions, and the number of questions which you can attempt is different for each grade. So a grade 8 question, like a grade 8 student can attempt all the questions which are in the problem set. Grade 9 student can attempt some of the questions. Like he cannot attempt the questions which are meant only for grade 8, and it's like that. And for each grade it becomes harder because like as you go higher the grade you can attempt only the harder questions in that sense. And if you're in like let's say ninth grade, you can attempt the question of ninth, 10th and 11th grade. Russian system has 11 grades and Indian system has 12 grades. Yes. So basically if you are in 10th grade you fail ninth grade, you fail the one grade lesser than yours. So I was in 10th grade when I failed, so I attempted the questions of ninth grade basically. Yes. That's how it So works. basically what happens is जो रशिया का स्कूल सिस्टम है दैट इज 11 तक, हमारा स्कूल सिस्टम 12 तक है। तो ये जो ओलंपियाड है दिस इज फॉर द 4 एल्डेस्ट ग्रेड्स, सो 8 9 10 11 इन रशिया, एंड अगर तुम इंडिया में तो 9 10 11 12, 9 10 11 12। तो बेसिकली अगर तुम 12th में हो तो 11th के वाले क्वेश्चंस के लिए तुम एलिजिबल हो जाओगे, अगर तुम 10th में हो तो 9th वाले क्वेश्चंस के लिए तुम एलिजिबल होगे। सो दिस इज हाउ इट गोस, एंड so you get around 2 months, 2.5 months time to attempt all the questions। तुम्हें उन questions को डॉक्यूमेंट करना होता है, लिखना होता है, एंड देन फोटो खिंचवा के या फिर कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग करके सेंड करना होता है वहां पर। ओके, आवाज आ रही है? बीच में कनेक्शन आई थिंक लॉस्ट हो गया। ओके, so this is how you do। So basically what you need to do is you need to fill up the questions। You have 2.5 months of time, and ultimately तुम्हें select करने होते हैं क्वेश्चन, सेंड करने होते हैं क्वेश्चन, एंड दे सेलेक्ट द क्वेश्चन, दे मार्क द क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन का 7 नंबर मिलता है तुम्हें, एंड अगेन देयर आर पार्शियल मार्किंग आल्सो, 1 से 6 मार्क्स में मिलता है डिपेंडिंग ऑन हाउ मच प्रोग्रेस हैव यू मेड। एंड अल्टीमेटली आउट ऑफ ऑल दी सॉल्यूशंस जो जो वहां पर आते हैं, तो दे सेलेक्ट देयर इज अ कट ऑफ, एंड कट ऑफ के ऊपर जितने भी बच्चे हैं, दोबारा कनेक्शन लॉस्ट हो गया है। ओके, सो देन दे डिसाइड अ सर्टेन कट ऑफ, एंड कट ऑफ के ऊपर जितने भी बच्चे हैं उनको बेसिकली सेकेंड राउंड के लिए रशिया बुलाया जाता है। रशिया में जो ट्रैवल एक्सपेंस होता है वो अपना ही होता है, बट अगेन खाने का और स्टे का दैट सोसाइटी प्रोवाइड्स फॉर। एंड अगेन इफ यू लुक एट द क्वेश्चंस ऑफ शेरिगन ओलंपियाड जो प्रीवियस आ रहा है, एंड यू कैन इजीली फाइंड दैट ऑन गूगल, यू विल सी हाउ अमेजिंग दीज क्वेश्चंस आर। एंड ऑफ कोर्स इसके सॉल्यूशंस भी कुछ कुछ सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं उन्होंने, एंड इस बार के सॉल्यूशन हमने डिसाइड किया कि अर्नव और प्रणव मिलके बनाएंगे, एंड वी विल अपलोड देम ऑन वेदांतु ओलंपियाड स्कूल वेरी सून। तो प्रणव, तैयार हो सॉल्यूशन बनाने के लिए? Yes, sir.
Okay, a lot of people are asking which class is Arnab in. So Arnab ने अभी 10th class के exams दिए हैं and he's just moved into class 11th and he's preparing for Maths Olympiad and बहुत amazing तरीके से prepare कर रहा है for Maths Olympiad. So Arnab, what are your plans for the next 2 years, 11th or 12th? Now I will like just focus on INMO for now. For like I have got only 1 year, only the 11th and 12th is only if I be in the top 60. But and mainly for ISI and CMI entrances. Amazing, amazing. And प्रणव के बारे में तुम ऑलरेडी जानते हो। प्रणव तो अब एक अच्छा खासा फेस बन चुका है वेदांतु ओलंपियाड स्कूल का। इसको ज्यादा ज्यादा लोग चाह रहे हैं। अगेन प्रणव, वी वांट टू सी योर वीडियोस मोर ऑफन देन नॉट इन दी स्कूल। सो नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है तुम्हारा? I'll try to post within the next week. यस, तो बच्चे बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं भाई, तो वो जल्दी जल्दी चाहिए। ठीक है। Pranav is also in class 11th. He's also, so both of these students have moved from class 10th to class 11th, guys. दोनों बच्चे क्लास 10 से क्लास 11 में, दोनों का फर्स्ट सेकंड तक शेयरिंग है, दोनों ने फोड़ दिया, फोड़ाफाड़ी मचा दिया। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि बच्चे पूछते हैं। सो हाउ टू पार्टिसिपेट? सो हु विल स्टार्ट? प्रणव, हाउ टू पार्टिसिपेट इन दिस ओलंपियाड? So basically, the question paper comes in January, I think, and you can just find the paper on like the SHARYGIN site. You can type SHARYGIN Olympiad and you can get the paper. Only thing is वहाँ पर थोड़ा सा रशिया में लिखा होता, तो वो इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता था। Yeah, you can use the Google Translate, and then I think there will be some registration form somewhere on the site. You fill that form to get the access to the site. When you solve a problem, you can submit on the problem or on the like contest portal. Like even after you solve one problem, you can submit it problem wise. And after I think it ends in March beginning. When the contest ends, it got automatically submitted when you have like uploaded all your problems, and then they grade it and then they revert back to you if you are qualified. Amazing. So basically क्या होता है कि जनवरी के sometime in January they release the problems. So there's a set of 24 problems which they release, and each problem, वो हर problem के साथ grade भी लिखते हैं, तो तुम्हें आइडिया लग जाता है कि तुम्हें कौन से problems attempt करने हैं. And so you have around 2 months of time to 3 months it is. I think it is in December. हाँ दिसंबर के आसपास हो जाता है। तो बेसिकली है यस, बट दिसंबर के एंड में होता है वो। तो आई एम टेकिंग जनवरी, फरवरी एंड मार्च के स्टार्टिंग, तो 2.5 महीने के आसपास। Probably. I don't know. 2.5 महीने के आसपास। सॉरी अर्नब? The questions were released on December 1st. December 1st, okay, so around 3 months. 3 months, so December, January, February. So again तुम घर बैठे बैठे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। एंड सो अगेन इतना प्रेशियस एग्जाम है कि यार घर बैठे बैठे भी तुम्हारे पास जितने भी सोर्सेज हैं तो उनका यूज कर सकते हो, एंड देन यू सबमिट द प्रॉब्लम। सो बेसिकली you solve the problem, you document them, you write them, and ultimately you can register on their site, which is again easily available. You can google them and आराम से उनका साइट के ऊपर चले जाओगे, पहला ही लिंक है, साइट के ऊपर चले जाओगे। उसमें रशिया को इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है तुम्हें बस, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अ फ्यू ऑफ द थिंग्स, एंड यू आर गुड टू गो, एंड यू हैव टू सबमिट ऑल द प्रॉब्लम्स। तो जब जैसे एक प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ तो उस प्रॉब्लम को तुम सबमिट कर सकते हो, एंड जो भी डेडलाइन होती है, डेडलाइन के बाद ऑटोमेटिकली तुम्हारे सारे के सारे प्रॉब्लम्स दे आर सबमिटेड, एंड अल्टीमेटली वो चेक होते हैं। चेक होने के बाद दे रिलीज द कट ऑफ स्कोर, एंड उसके ऊपर जितने भी बच्चे उनको रिलीज उनकी लिस्ट निकालते हैं, एंड तो उनमें से ये 2 बच्चे इस बार बैठे हुए हैं तुम्हारे सामने। So 2 out of those 7 Indian students who got selected are in front of you. So whatever doubts, whatever questions that you have, you can ask them, because ये तुम्हारे लिए time निकाल कर यहाँ पर आएंगे। So any question that you have, you can either ask it now, or if you are seeing it in the recorded form, you can always comment them. You can always comment, and I'll make sure that Pranav or Arnav answer them. Okay, questions का level क्या होता है? Avnish is asking questions का level क्या होता है? So Arnav, do you want to answer this? Okay, like questions from 1 to 10. These are like normal, like RMO to INMO, like mid-level. And after that, from 11th and 12th question, it like increases the difficulty. Like last problem in problem 24, it's mainly on 3D geometry. So it's not really a
popular subject. Hmm. And problem from 11 to 20 to 23, these are all like IMO shortlist to IMO problem. Like this time it was quite easy compared to 2021 SHARYGIN. This was easy, So but the cutoff is high. Okay, yes, that is why the cutoff went high. yes. Okay, Never had cutoff went like high like this, like 80 to 90. yeah. Pranav, your take on how the problems are. So I think first 10, 12 problems are easy, not that hard. Then 12 to 20 problems are like, some of them are quite hard. I remember problem 17. I died on it for like 9, 10 hours. I think it took 3 or 4 days to finish that My problem. God, my God. That was very hard. And I like the problem a lot, though. The Ah, solution is nice. It hmm. requires a lot of concepts, my solution. There is also another solution which is like not that story heavy, but mine was. And then the last 4 or 5 problems are like quite hard. I remember that problem 23 or 24, someone told me that it doesn't even have a solution on EOPS. No one solved it till now. Oh. So again, so basically, questions start becoming harder as you go from question number 1 to question number 24. And जैसा कि इन्होंने बोला कि लास्ट के जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं दे आर रियली वेरी हार्ड एंड उसके उनके अभी तक क्वेश्चंस एपीएमओ में भी या एओपीएस में भी नहीं, सॉरी एपीएमओ नहीं, एओपीएस में भी अभी तक नहीं आए हैं, राइट. सो लास्ट के क्वेश्चन जाते जाते दे बिकम क्वाइट हार्ड एंड तुम इसी का अंदाजा लगा सकते हो यार. मतलब यू हैव ऑल द टाइम, यू हैव ऑल द प्रिविलेजेस, यू हैव ऑल द सोर्सेस अवेलेबल, एंड स्टिल very few students are able to clear that cutoff. तो देख लो कि जाते जाते मतलब स्टार्टिंग के कुछ प्रॉब्लम्स यू माइट बी एबल टू डू, बट जैसे एज यू गो अप हायर तो अगेन काफी काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. एंड अगेन गाइज, मेरा ये भी मानना है प्रणव एंड अर्नव दैट दोज हु वांट टू इम्प्रूव द ज्योमेट्री उनको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि उनके सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं अब तो काफी जगह सोर्सेज पे, वो करना चाहिए. एटलीस्ट पहले 10 क्वेश्चन, पहले 10-12 क्वेश्चन जो जो बेसिक लेवल के होते हैं वो सारे ईयर्स के लगा लेना चाहिए, सो दैट दे आर एबल टू गेन द कॉन्फिडेंस एंड ऑल्सो सी कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ओवरऑल ज्योमेट्री को इम्प्रूव करने के लिए. बिकॉज दिस इज माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू दैट सो एक तो हाउ टू पार्टिसिपेट, हाउ टू प्रिपेयर एंड हाउ डिड यू स्टार्ट. So basically, when you got to know about the SHARYGIN, so what approach did you make? और in general कि ज्योमेट्री को जब तुमने स्टार्ट किया था, whenever you started कि यार प्रिपरेशन करते हैं तो ज्योमेट्री को किस तरीके से अप्रोच किया था, तो ये काफी बच्चों का कॉमन सवाल है. एंड आई गेट टू ये मुझे बहुत ज्यादा पूछा जाता है इवन ऑन टेलीग्राम के साथ ज्योमेट्री नहीं आता है. एंड ज्योमेट्री एक्चुअली में बहुत सारे बच्चों का वीक पॉइंट होता है बिकॉज दे डोंट स्पेंड टाइम on geometry. So how did you start? How much time did you uh, uh, did you कितना कितना टाइम दिया ज्योमेट्री के ऊपर? एंड ये जो अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है, झलक रहा है, तो ऑफकोर्स ये कॉन्फिडेंस शेरिगन क्लियर करके एंड एग्जाम्स लाइक इनमो क्लियर करके तो आ ही जाता है. बट अगेन वो एक फील आती है कि फील यार अब तो मैं फोड़ दूंगा. मतलब सिंपल लेवल वाले क्वेश्चन, मीडियम लेवल वाले क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे मुझसे, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो. तो वो वाली फील कितनी देर बाद आई अगर हम बोले कि आज डे 1 है और आज मुझको ज्योमेट्री स्टार्ट करनी? प्रणव. So how I started, it was like I did first challenge and then thrills of pre-college mathematics CTPCM. Uska I did third and fourth chapter. I did first two exercises. I didn't do much. Like after a point I started, it's not that nicely written. So I got bored of it at a point. And then बिकॉज बहुत सारे प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर थोड़ा सा. yeah, and then I started reading EGMO by Evan Chen, like EGMO. That's like very nice book. It's nicely written and you can understand it like very nicely. The questions also are very nice. After first chapter, you gain some confidence that you can solve few PYQs because it's there. Evan has picked all the problems very nicely. And then there is this book known as A Beautiful Journey Through Olympiad Geometry by Stephen something. The surname is hard to say. Yeah, so basically ये जो बुक बोली है मेरे पास ऑलरेडी पढ़ी है, तो किसी को चाहिए तो टेलीग्राम पे पिंग कर देना मुझे, I'll send it to you. हाँ प्रणव. And this is a very nice book. The diagrams are like nice there, and problems are also nice. I think that inversion and other techniques are explained very nicely in this one. And then you can do some random problems like some ISL problems or SHARYGIN problems. So basically you started with if I have to sum it up,
summary दूं तो basically you started with pre-college में Yeah, but of I don't course recommend doing pre-college mathematics that much. okay so he doesn't I do but ये Yeah, मुझे okay. मुझे मुझे लगता है कि for someone who has to start Mhm. basically तो any other book would take that pressure off because pre-college में होता क्या है there are a lot of solid examples फिर उसकी exercise topic wise सब topic wise exercise दी हुई है तो starting book it's a very good book and after that of course you can pick up Ivan Chan and geometry books बहुत सारी और books भी हैं basic level की advanced level की तो तो दिस इज व्हाट ओके सो इससे पहले सो हाउ मच टाइम सो अगर हम मैं बोलूं कि इफ डे वन वाज आज इफ डे वन इज द डे यू पिक्ड लेट्स से प्री कॉलेज मैथमेटिक्स तो किस डे पे यू फेल्ट कॉन्फिडेंट इनफ कि यार मेरे को मीडियम लेवल प्रॉब्लम्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ओलंपियाड्स के अंदर हो जाएंगे एक वो फील आ जाती है ना कि यार अब तो इस I लेवल के don't think I प्रॉब्लम्स still have that feel no though. no I'm talking about not the hard ones the medium level problem Yeah, I still feel that during contest the difference is when I am at home, I'm mostly listening to songs. Like my songs are running 24 hours while I'm like even during sometimes I play them while sleeping. I used to play that. Hmm. So the atmosphere difference. I'm more relaxed. I don't have some time pressure. But in contest, it's like you have this time pressure. Like in INMO, that P1 was not that hard, but during that time pressure, I could not solve it. Hmm. So I think that's a huge factor. But I think you get when you cannot get to such a confidence unless you like geometry. And to like geometry, it's upon you. Like there are some people who get a medal in IM and still don't like geometry that much. So it's person to person. For me, it was I think when I finished EGMO chapter one, I started liking geometry, and gradually I started becoming more and more confident. And how much time on an average would you spend on geometry problems a day? Right now, it's very less because I'm completing my physics bachelor. So I'm But in talking. general, it's like if I'm doing some geometry, like mostly it's like I do geometry for 1 week, then combinatorics for 1 week. It's alternating. And when it's a geometry week, I do geometry for 6 to 7 hours a day. So And I think I can solve one or two problems और जब at तुमने most स्टार्ट of it. किया था तब कितने टाइम स्पेंड करता था? 2 to 3 hours. Okay, great. Because I wasn't that serious for Olympiads that time initially. But when I started EGMO, it was 8 9 hours for Amazing. 2 3 weeks until I did first two chapters. Okay, so moving on to Arnav. Arnav, how about you? तेरा जर्नी कैसा रहा? How did you start geometry number? पहले क्या किया उसके बाद क्या किया and how did you get that confidence कि अब मेरे से काफी questions हो जाएंगे किसी भी contest के? Firstly, you need to be quite like confident, like that. You need to be confident for doing angle chasing of cyclic quadrant and those things. So DK Bhattacharya, that book is there. That book can be solved easily. Like if you go on, you get confidence for doing excursion mathematics and pre-college mathematics. And yeah, I recommend pre-college mathematics because it's very like friendly book, you may say. Like many solved examples are there. So it takes like 3 or 4 months time to do those things. And after that, I got When hands you say on. 3 to 4 months, so how much time on the daily basis would you spend on geometry? Like I spent quite a lot of time, 10 to 11 hours. Amazing, super. तो भाई And अगर ऊपर जाना तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ये दोनों की स्टोरी से यही समझ में आ रहा है मेहनत तो करनी पड़ेगी तो ही स्टार्टेड विद डीके भट्टाचार्य एंड देन मूव्ड ऑन टू प्री कॉलेज एंड देन मूव्ड ऑन टू अदर बुक्स yes, the other books like Ivan Chen, that EGMO, and Lemmas in Olympiad Geometry by Tito Andrescu. That book. It covers a lot of lemmas. yes Like, and you try to uh, prove those lemmas on your own yes, and lemmas use them can be proven. And I don't find in books about solid geometry because SHARYGIN mainly covers a lot of solid geometry as well. Like, Hmm. I'm not like used to that part. Okay. So solid geometry में did you spend time? No, quite not. Okay, no. Okay, great. Super.
सो बेसिकली यार देखो मतलब अर्नब और प्रणव सो बेसिकली अर्नब को 3 महीने लगे, 3-4 महीने, तो तुम्हें भी मतलब उतना ही टाइम लगा अगर सीरियस, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्टूडेंट जिसको डर लग रहा है अभी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर भी वो बच्चे अभी यहाँ पर देख रहे हैं जिनको डर लग रहा है ज्योमेट्री से, या फिर वो देखेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में जो जिनको डर लगता है ज्योमेट्री से, एंड वो एक एक मैसेज अगर लेके जाना चाहें कि हाउ टू कैन द ज्योमेट्री बी इम्प्रूव, नंबर वन, एंड हाउ टू इम्प्रूव, या कितना टाइम लगेगा अगर मैं सीरियसली प्रिपरेशन करता हूँ, तो पहले तो कैन इट बी इम्प्रूव, ऐसा हालत है। Yeah, yeah, of course. ठीक है, सो अगेन इफ यू स्पेंड टाइम, इनफ टाइम, तो कोई भी चीज है जिंदगी में, कुछ भी चीज इंप्रूव हो सकती है, मतलब एज सिंपल एज दैट। एंड नंबर टू, अगर सीरियस स्टडी करो, अगर तुम 3 से 4 घंटे लगाते हो हर रोज, तो प्रणव ने 2 से 3 घंटे लगाए, अगेन काफी चीजें की। अर्नब ने काफी ज्यादा टाइम लगाया, 10 से 11 घंटे भी बोल रहा है, बट अल्टीमेटली आफ्टर स्पेंडिंग 10 to 11 hours एवरी डे, एंड ही वॉज एबल टू take his geometry level to quite a bit high in about 3 to 4 months of time. So जितना ज्यादा टाइम लगाओगे, जितना अच्छी तरह करोगे प्रैक्टिस, सो एज प्रणव टोल्ड, इसने एक क्वेश्चन को करने में 3 दिन का टाइम लगाया, 3 days 9 hours, right? So Arnav, what was your in this year Sharigan, कितना maximum time किस क्वेश्चन को, या कितना टाइम लगा? Maximum I took time in solving that one. Like there was a problem on that in circles and X circles you had to find the projections lengths on those sides or something. So At 12 lengths, right? yes, P12. Yes. That one was very like lengthy. Like it took me like one day full to write the whole solution. It was My like God. up to Yeah, 7 right solution. across hard. And time you may say like 4 to 5 days for that only. Amazing, amazing. So 4 से Did you do 5 दिन लग रहे हैं synthetic भाई। for that problem? Yeah. Did you do synthetically that problem, or you just trick bashed it? No, only trigonometrically. Yeah, trick bash was easier to find, I think. Superb, superb. So by the way, guys, Arnab was a part of the camp last year, and he is in INMO batch abhi, and he's preparing for Math Olympiad, and the target is INMO. Pranav को already तुम जानते हो, Pranav is already INMO qualified, and again he is taking lectures on on Vedantu Olympiad School, and he will be preparing some of our finest students going forward. And let us say all the best to these two for the second round, guys, and I'm very hopeful with the kind of efforts that they're making. जितनी मेहनत कर रहे हैं ये दोनों, they will be able to score very well in round two as well, and ultimately achieve the diploma. Uh, all right, guys. Any other questions? If you have, I am seeing the chat. अगर कोई और questions हैं, अर्नब marks in IOQM. अर्नब, did you score 19, 20? कितने marks थे तेरे? Yeah, 20. अर्नब scored 20 marks in IOQM, guys. 20 marks in IOQM. And Pranav के तुम्हें पता ही है 34 out of 40 in IOQM. Right, so let us take inspiration from these two kids, guys, and if there are any other questions that you have that we might have missed, तो please उसको comments के अंदर डाल देना, and we will make sure that they reach these two, and उनके answers definitely हम तुम्हें बता पाए. Okay, thank you Pranav and thank you Arnav for your time, and all the very best for round two, and फटाफट ही मचाते हैं यार, and इसी तरीके से आगे प्रिपरेशन करते रहते हैं, and आई एम श्योर इस टॉक से बहुत सारे बच्चों को जिनका ज्योमेट्री वी का इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, एंड दे विल अल्टीमेटली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर ज्योमेट्री, दे विल स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम, एंड अल्टीमेटली तुम्हें बता दिए कि ऑल इट टेक्स इज डेडिकेशन। अगर डेडिकेशन है तो 3 से 4 महीने में ज्योमेट्री काफी अच्छी इंप्रूव की जा सकती है, प्रोवाइडेड राइट इंटेंशन इज देयर, एंड यू शुड बी एबल टू लव, एज प्रणव सेड, ज्योमेट्री, बिकॉज अगर अगर अच्छा लगेगा ज्योमेट्री करना तभी तुम करोगे, नहीं अच्छा लगेगा, एक तरह से बर्डन लगेगा, तो 2-3 दिन 4-5 दिन के बाद अपने आप छूट जाएगी वो, मतलब देयर इज नो, तो वो तुम फॉलो भी नहीं कर पाओगे, राइट? सो यू शुड स्टार्ट enjoying it, and enjoyment कैसे होती है, you should start with easy books, and easy books के बाद pick up some basic books, and जैसे कि books इन्होंने mention की है, उन्होंने books से कोशिश करो करने की। अगर if you are a part of Vedantu Olympiad School, तो वहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग तरीके से ज्योमेट्री का कोर्स भी चल रहा है, प्री INMO बैचेस के अंदर ज्योमेट्री काफी अच्छी तरह चल रही है, हमारी असाइनमेंट्स बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है, तो वो तुम कर सकते हो, आई एम वेरी श्योर यू विल फॉल इन लव विद ज्योमेट्री।
All right, guys. So that is it from our side. So, guys, फटाफट से all the best लिख दो. All the best to Pranav and Arnav. All the best to Pranav and Arnav for round two, guys. And let us hope कि round two के बाद भी we are able to call both of them on this particular channel to motivate other students. Take care. God bless you. Bye, everyone. Pranav, Arnav, you want to say any last things to to someone who's starting geometry, जिसको डर लग रहा है geometry से? एक लाइन, दो लाइन, अगर तू प्रणव बताना चाहता है. Don't be afraid and don't think of like algebraic manipulation in geometry. Like sometimes thinking that is fine, but if you reduce it, you will like it more. Okay. Arnav, And uh, don't focus on participating and winning competitions. You are doing only geometry. Like you have to feel the enjoyment in it. Like geometry is, in my opinion, the most beautiful part of mathematics. So yeah. यस एंड आई बिलीव, मुझे ये लगता है कि ज्योमेट्री अगर अच्छा है और अगर अच्छा बन जाता है ना, तो यार तुम्हारी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी तरह बन जाती है. यू आर एबल टू सी थिंग्स व्हिच अदर्स कांट, एंड नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स बट ऑल अदर थिंग्स इन लाइफ, राइट? सो ज्योमेट्री अच्छा होना वैसे ही बहुत जरूरी है, बिकॉज इमेजिनेशन क्रिएटिविटी को बहुत अच्छी तरह एनहांस करता है, एंड तुम्हें वो देखने की शक्ति देता है जो शायद बाकी तुम्हारे तुम्हारे आसपास के लोग नहीं देख सकते हैं, राइट? सो यस, इस पे एफर्ट डालना, इट इज वर्थ इट, पर्टिकुलरली इफ यूर इन क्लास 8th 9th एंड 10th. 11th 12th में थोड़ा सा स्टार्ट करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वो जेई का या फिर नीट का प्रेशर हो जाता है. बट अगर तुम मैथमेटिक्स ओलंपियाड इज योर फर्स्ट प्रेफरेंस, देन यू शुड डेफिनेटली spend time on geometry and try to make it worthwhile. All right, guys. On that note, let us say bye. Thank you, Pranav. Thank you, Arnav, for your time, बच्चों, and all the best for round two. And I hope to see you both. अगर round two होता है किसी तरीके से हो जाता है, then we definitely hope to see you after round two results also on this channel. Thank you, sir. Take care, बच्चे. Bye.